Now, what is a secondary structure? Secondary structure is defined as the regular folding of a polypeptide chain in an alpha helix. Let me highlight this for you guys. In an alpha helix or a beta pleated sheet. Now, अब यहाँ से हमें एक question हो गया. Now, what in the world are basically your alpha helixes or beta pleated sheet? Now, let's recall something. हमने एक चीज पढ़ी थी a few days ago, which was hydrogen bonding, right? And hydrogen bonding किन species के बीच में होती है? It's between hydrogen and oxygen, hydrogen and nitrogen, hydrogen and fluorine. Now, let me draw a polypeptide bond. Let me draw a peptide bond for you. So it was carbon, double bonded to oxygen, nitrogen, and hydrogen, right? ये एक अमीनो एसिड रिमेनिंग इसके साथ है, ये एक अमीनो एसिड है, और फिर इसकी चेन कंटिन्यू हो रही है, इसकी भी चेन कंटिन्यू हो रही है. Now this amino acid, this has for example, ये इसका कार्बन है, और वेट इन दोनों के बीच का पहले पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड शो करती हूँ मैं. Here is a carbon which is bonded to the nitrogen, oxygen, and then the hydrogen, and then it's continued. So हमारे पास अमीनो एसिड्स इस तरह से आपस में एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ज्वाइन टुगेदर है. Now what happens is that the oxygen of one amino acid can have a weak interaction or a weak bond with the hydrogen of the amine group within the same polypeptide chain. यानी कि हमारे पास कोई दूसरी polypeptide chain के साथ भी हो सकता है, within the same polypeptide chain भी हो सकता है. और usually जो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं वो हम within the same polypeptide chain की बात कर रहे होते हैं. That the oxygen of the carboxyl group of one polypeptide chain is attracted to the hydrogen of the amino group of another amino acid within that chain. And it is also possible कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि consecutive amino acids. So for example, this is amino acid number 4 and this is amino acid number 9. So the amino acid number 9 and the amino acid number 4 can also develop weak hydrogen bonding between them. And इससे क्या होता है, अगर for example 9 और 4 के दरमियान bonding है तो वो straight line में तो नहीं हो सकती. It is possible कि एक bending हो जाए. So what happens is that the polypeptide chain, because of these weak interactions, because of these hydrogen bonding within the polypeptide chain itself, what happens is that either a helical structure, this is a helical structure for you, or an arrow-like or a ribbon-shaped structure is developed. Now, if you notice, ये हमारे पास एक ही polypeptide chain है. It's not a different polypeptide chain. And इसमें हमारे पास देखो sequence of amine, ये हमारा primary structure है. This is our primary structure in this molecule, right? Now what happens is कि ये अपने ही इर्द गिर्द wrap around हो रहा है. It is the polypeptide chain is bending, or it is it is basically bending upon itself. So what happens is that the oxygen of the C double bond O group of one amino acid and the hydrogen of the amino group of another amino acid interact via hydrogen bonding. This causes the polypeptide chain to bend back on itself. तो इसकी वजह से या तो हमारे पास एक helical spring like structure बन जाता है जिसको हम alpha helix कहते हैं. अब इसमें ज्यादा, अब देखो इसमें ज्यादा bending, इसमें ज्यादा क्या कहते हैं interaction होगी, तभी हमारे पास इतनी ज्यादा bending और fold आया. तो हेलिकल स्ट्रक्चर में रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और जो हमारे पास रिबन लाइक या एरो शेप्ड बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं वो थोड़ी कम फ्लेक्सिबल है और उनमें थोड़ी कम बेंडिंग होती है रिलेटिव टू अ हेलिकल स्ट्रक्चर. तो हम कहते हैं कि उनमें जो हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो डिग्री ऑफ इंटरैक्शन है या जो डिग्री ऑफ बॉन्डिंग है, दैट इज रिलेटिवली लेस. So is the secondary structure understandable to you guys? Any questions about it? Okay, so basically what is exactly to understand so far is कि सबसे पहले तो हमारा primary structure बन गया, that we have a chain of amino acids which we call the polypeptide chain and that is providing the basic framework. ठीक है.
ना हमारे पास फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने ये कहा कि वही जो हमने एक चेन इनिशियली बनाई थी, उस चेन में आपस के जो अमीनो एसिड्स थे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड थे, दे वर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर वाया द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सी डबल बॉन्ड ओ एंड द एनएच ग्रुप, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, and that hydrogen bonding was causing the polypeptide chain to bend on itself, जिसकी वजह से या तो हम एक हेलिकल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा था, या फिर हमारे पास एक रिबन लाइक या एक एरो शेप्ड स्ट्रक्चर आ रहा था। नाउ सो फार हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम जब बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्मुलेट होने की, तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे हैं ना बेसिकली। सो यहाँ पर हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड्स थे वो किसके बीच में थे, पेप्टाइड बॉन्ड्स हमने अभी ऊपर अंडरस्टैंड किया कि वो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और हमारे अमीनो एसिड ग्रुप के बीच में होता है, राइट। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें भी हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच और एन एच टू ग्रुप इन्वॉल्व है इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। फिर जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच इन्वॉल्व है, राइट। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कंप्लीट कार्बोक्सिल ग्रुप और कंप्लीट अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व थे, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड ओ खाली और एनएच खाली इन्वॉल्व है। अभी तक हमने आर ग्रुप्स की बात नहीं की है, राइट। वी हैवंट टॉक्ड अबाउट द आर ग्रुप व्हिच इज यूनिक टू एवरी अमीनो एसिड, राइट। तो हमारे पास अभी तक जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा और जो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा, उसमें वी वर नॉट डिस्कसिंग और वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट द आर ग्रुप। सो फार वी हैव इग्नोर्ड द आर ग्रुप कंप्लीटली, बट ऑब्वियसली वो आर ग्रुप भी इस पॉलीपेप्टाइड चेन का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना हमारे पास उसका भी रोल होगा, वो भी इंटरैक्शन कर रहा होगा। सो हमारे पास जो आर ग्रुप्स होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर ग्रुप्स, ठीक है। हमारे पास या तो पोलर आर ग्रुप्स होंगे, or we would have charged R groups, or we would be having non-polar R groups, जिसकी वजह से हमारे पास पोलर अमीनो एसिड्स, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स और हमारे पास पोलर चार्ज और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स बन रहे होते हैं। Now, before we move forward, can anybody of you tell me the difference between a polar compound and a charged compound? What do you think is the difference between a polar compound and a charged compound? सो बेसिकली जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बात की थी कि हमारे पास एक पार्शियल पोलर इज रिलेटेड टू अट्रैक्शन, यस यू कैन से दैट पोलर इज रिलेटेड टू अट्रैक्शन। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास एक स्पीशी जिसमें पार्शियल चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सी हाइड, ये मैं कोई आर ग्रुप की एग्जांपल नहीं दे रही, मैं बहुत कॉमन पोलर कंपाउंड की एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, HCl। सो नाउ क्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। So what that means is कि हमारे पास क्लोरीन जो है like oxygen, it has a greater tendency to attract electrons। तो अगर हमारे पास HCl का ये बॉन्ड है तो हमारे पास जो electrons हैं they would be drawn more towards the chlorine and therefore the chlorine would have a partial negative and a partial positive। अच्छा, ये हमारे पास पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब कि हमारे पास डाइपोल क्रिएट हो रहा है। यू गाइज माइट हैव स्टडीड डाइपोल इन केमिस्ट्री, राइट। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मतलब ये होता है कि हमारे पास दोनों एंड्स पर डिफरेंट चार्जेस हैं जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ डाइपोल क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली पोलैरिटी, ठीक है। जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो हो रही है, कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि एक स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन कर लिया और एक ने लूज कर लिया। दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, but one species is pulling the electrons more towards itself, therefore having a negative, partial negative charge onto it, and one species has a lesser tendency of electrons or a lesser electron cloud towards itself, so it is partially positive। तो ऐसे जो हमारे पास कॉम्पाउंड्स होते हैं हम उनको पोलर कॉम्पाउंड्स कहते हैं, और पोलर कॉम्पाउंड्स में हमारे पास पार्शियल चार्जेस होता है।
अब चार्ज्ड आर ग्रुप्स क्या होते हैं या चार्ज्ड कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं? चार्ज्ड कॉम्पाउंड्स हमारे पास हमारे आयोनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयोनिक कॉम्पाउंड्स जो होते हैं उनमें से एक आयन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि हमारा कैट आयन होता है, और एक आयन पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है जो कि हमारे पास एन आयन होता है. So this is basically ionic and this is basically species having partial charges. इस पे हमारे पास कंप्लीट चार्जेस होते हैं और इधर हमारे पास पार्शियल चार्जेस होते हैं. ना नॉन पोलर का मतलब है कि ना तो ये आयोनिक है और ना ही इनमें कोई पोलैरिटी है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज हमारे पास कितने हमने डिस्कस कर लिए आर ग्रुप्स? तीन तरह के आर ग्रुप्स होते हैं. या तो हमारे पास आर ग्रुप पोलर होगा, या हमारे पास आर ग्रुप नॉन पोलर होगा, या चार्ज्ड होगा. These are the three types. So what happens is how we define our tertiary structure. Let me add a page over here. So our tertiary structure. Tertiary structure is basically the regular 3D folding of a polypeptide due to now. कौन सी हमारे पास बॉन्डिंग, अभी तक हमने जो बॉन्ड्स देखे थे अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो कौन से बॉन्ड्स थे? यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही थी या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था वो पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से फॉर्म हो रहा था. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास वी वर ऑब्जर्विंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सी डबल बॉन्ड O and NH. Now what is happening in a tertiary structure? So for example, we have this amino acid. ठीक है, this is our amino acid और ये उसका एक polar R group है. ठीक है, and then we have this another amino acid in the polypeptide chain. माइंड यू कि हम एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की बात नहीं कर रहे हैं. दिस इज विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन. अब ये दोनों पोलर आर ग्रुप्स हैं, बोथ ऑफ देम आर पोलर आर ग्रुप्स. So when polar R groups interact with one another, when they are face to face one another, they have an attraction or they form an interaction, and this is basically hydrogen bonds. So when polar R groups come face to face one another, they interact via hydrogen bonding. Subsequently, if I have an amino acid, this is my amino acid, and this is another amino acid. Now this has an R group which is non-polar, and this has an R group which is non-polar. ठीक है? Now when two non-polar R groups come face to face one another, they too interact, and they interact via hydrophobic interactions. Now, yesterday we studied the structure of a phospholipid bilayer, and over there we talked about hydrophobic. What is the meaning of hydrophobic? And can anybody of you suggest कि हमारे पास जब दो non-polar R groups आपस में interact करते हैं, तो उन interactions को हम hydrophobic interactions क्यों कहते हैं? Any suggestions? Okay, so basically, hydrophobic means water hating. Yes, so basically non-polar species, Hajra, they are hydrophobic. Yes, Abhiya, you're absolutely correct. Anything which does not bond with water or which is not water soluble, they have hydrophobic interactions. Why? Because they do not like water. They are not compatible with water, so they are water hating in nature. And non-polar species, because they are not ionic in nature. हम ionic bonds के लिए पढ़ते हैं ना, that ionic bonds are soluble in water. Why? Because they dissociate into their ions. And for example, NaCl. Now, NaCl is ionic. When I add this NaCl solid to water, when I add this to water, what happens is that it is instantly
dissociated into its ions, right? It ionizes in water. Subsequently, if I talk about HCl, तो HCl का क्या होता है? HCl के ऊपर partial positive और partial negative charge होते हैं, right? And for water, we know that water is basically also a polar molecule. Why? Because it has a partial positive charges on the hydrogen and a partial negative charge on the oxygen. So what happens is कि जो water है उसके साथ जो ionic species हैं, जो charged species हैं जिनके ऊपर complete charge होता है, और जो partial charges वाली species है, जैसे हमारे पास ये polar compound है, ये हमारे पास ionic compound है. These are having complete charges on them, and this is having partial charges on them. And water itself is polar. Now what happens is कि हमारे पास जो partially positive species हैं, they are attracted to the negative species, right? And our positive species are attracted to our negative species. तो water के साथ हमेशा ionic compounds और water के साथ हमेशा polar compounds जो है वो बहुत अच्छी interaction या उनमें soluble होते हैं, right? On the contrary, anything which is non-polar, it does not have a partial charge or it does not have a complete charge on it. So they interact via hydrophobic interactions. It is like, for example, दो दोस्त हैं और उन दो एक्चुअली नहीं, एक दोस्त एक इंसान है और दूसरा इंसान है, उन दोनों को कॉमनली एक इंसान पसंद नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्पीशी एक्स एंड आई हैव अ स्पीशी वाई. Both of them dislike species E. So because both of them do not like species E, they run away from species E. And instead, the two of them bond on the fact that they do not like this particular species. So now this non-polar molecule and this non-polar molecule, they do not like water. They have hydrophobia. They are water hating. They move away from water. And because both of them have this water hating nature common to one another, they interact via what? They interact via hydrophobic interactions. Is this clear from this analogy? That why polar molecules and ionic molecules really are strongly attracted to one another? Now, the third type. I have an amino acid. ठीक है जी. This is my amino acid. And this is my amino acid. Now, this has a negatively charged R group, and this has a positively charged R group. Now, this is something that I think so you guys can answer. If a positive species bonds with a negative species, something which has a complete positive charge and something which has a complete negative charge, what type of bonding that is called? And you guys have studied this type of bonding in your O levels as well. When a positive species bonds with a negative species, what type of bonding that is? Very good. So it is a type of ionic bonding. Okay. Now lastly, अभी तक हमने जो bonds देखे हैं between R groups, you would have noticed that I have made dotted lines. Dotted lines का क्या मतलब है? जो हमारे पास weak bonds होते हैं ना, वो हमारे पास अच्छा, ionic bonding just by the way is not a weak bond. Sorry, वो हमारे पास strong bond होता है. But because ये हमारे पास within the amino acids बन रही होती हैं, तो ये relatively इतनी ज्यादा strong नहीं होती. और हम किसके comparison में इसकी बात कर रहे हैं? हम अपनी एक डाइसल्फाइड लिंकेज होगी, और वो डाइसल्फाइड लिंकेज क्या है? आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट इन अ बिट. हमारे पास बेसिकली वी सेड दैट वी हैव एन अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कि अमीनो ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और एक आर ग्रुप होगा विच इज यूनिक टू एवरी सिंगल अमीनो एसिड. तो एक तो हमारे पास आर ग्रुप होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन बॉन्ड आके लग जाए. So hydrogen is the smallest atom of the periodic table. So our smallest amino acid is that amino acid which has hydrogen in its R group, and that amino acid is basically glycine. Now एक तो आपको glycine का R group पता होना चाहिए कि उसका R group is just simply a hydrogen atom, and then you should know the R group of this one amino acid which is cysteine. अब cysteine का R group क्या होता है? ये मेरे पास एक cysteine का molecule है.
ठीक है जी। और ये जो सिस्टीन का मॉलिक्यूल है इसका R ग्रुप आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, CH2 bonded to S bonded to H, and then I have another cysteine molecule, and this is basically having the same R group obviously, which would be CH2, S, and H. Now these two cysteine molecules, when they come face to face one another, what happens is that they interact this way that this hydrogen and this hydrogen, they are lost. Okay? These two hydrogens are lost, and the bond which is formed is something like this. CH2, S, S, H2S, and then, sorry, C. And here is your cysteine. Now, this is a strong bond. It is a strong linkage of two R groups. Why? Because हमारे पास एक पूरी species lose करके ये पूरी जो हमारे पास ये chain है इसके साथ आकर connect करके ये एक bond form करी है. And this bond, this type of interaction, and this is only and only when two cysteine molecules combine together, or these two cysteine molecules are face to face one another, and when two hydrogen atoms are lost, a disulfide linkage is formed. So what happens is कि हमारे पास tertiary structure is the regular folding or regular 3D folding of a polypeptide due to how many bonds? Due to hydrogen bonds, hydrophobic interactions, ionic bonds, and or disulfide linkages, and or disulfide linkages between R groups of adjacent amino acids in a polypeptide chain. तो अब तक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया उसमें हम एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में और उसकी फोल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे. किस तरह से? The primary structure is just simply the basic structure, the basic framework of a polypeptide chain, which we define as the sequence of amino acids in a polypeptide chain. And then we said that the secondary structure is the regular folding of that same polypeptide chain in an alpha helix or beta pleated sheet, which results due to hydrogen bonding between the amino acids in a chain. यानी उसी chain कि जो हमारे पास, for example, you see, this is one amino acid chain, this complete one amino acid polypeptide chain is basically wrapped around or it is bended upon itself. Why? Because of these hydrogen bondings between the C double bond O and the NH group. And for the tertiary structure, within the polypeptide chain, हमारे पास obviously amino acids आपस में इस तरह से आमने सामने connected हैं. तो अब for example, where's my pen? Second. So over here हमारे पास ये तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट? लेकिन इसका R ग्रुप और इसका R ग्रुप तो बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट है. इसका R ग्रुप और इसका R ग्रुप तो बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट है. तो इन R ग्रुप्स के बीच में जिस तरह की इंटरैक्शन होती है वो इंटरैक्शन बेसिकली रिजल्ट करती है किस तरह के स्ट्रक्चर में? टर्शरी स्ट्रक्चर में. तो अभी तक all the three structures that we have studied so far are what? Are your regular folding occurring in one single polypeptide chain. अभी उसके बाद, inshallah, in our tomorrow's class, we will move towards a quaternary structure in which we will realize that हमारे पास जो बहुत सारे polypeptide chains आपस में आमने सामने आती हैं तो क्या होता है. So far we've only studied कि एक polypeptide chains की कितनी levels of folding, protein folding हो सकती है. So are all these three structures clear to you guys? Any questions so far?